हेलो गाइस, स्वागत है आपका डिज़ाइन विद साइराज इस हमारे यूट्यूब चैनल में। सो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज मर्ज इनहेरिटेंस इन क्रियो सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो मॉडल्स क्रिएट करेंगे और फिर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज मर्ज इनहेरिटेंस। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे फर्स्ट मॉडल। टू क्रिएट फर्स्ट मॉडल, क्लिक ऑन न्यू पार्ट सॉलिड and tick this box. First we will create pattern. Okay, and simply click on OK and select template MMNS part solid ABS and simply click on OK. Now we're gonna create sketch. For that, just click on sketch, select any plane you want. I'm selecting front one. Now just select this plane and click on sketch. इस प्लेन पे मैं एक sketch निकालूंगा, इसके लिए मैं यूज करूंगा line command. And to stop the command, just press escape. Okay. Now simply click on OK. अब इस sketch को मैं revolve command अप्लाई करूंगा. Okay. Just click on revolve. Sketch में हम select करेंगे इस sketch को जो हमने निकाला. Axis में हम select करेंगे इस line को. Okay. Now simply click on OK. And here is our first model, our pattern. Okay, now we are going to save this part, this model. Click on Ctrl S and I'm saving this part. Okay, okay. Now we are going to create second model, means we are going to create the core part. Okay, to create core part, just click on File, click on New, Part, Solid, Core. Okay, and simply click on OK. Again, select the template MMNS Part Solid ABS and simply click on OK. Now we are going to create core part, second model. Okay, again, create model, just click on sketch and select any one plane. As we selected front plane before, so I'm selecting again front plane. Okay, select the plane and click on sketch. Now we are going to create sketch on this plane. To create sketch, just click on line or any command you want. I will draw a simple sketch. Okay, and to stop the command, just press escape. Now click on OK. अब इस स्केच को मैं रिवॉल्व कमांड अप्लाई करूंगा. ओके, तो अप्लाई रिवॉल्व कमांड, जस्ट प्रेस रिवॉल्व. स्केच में हम सिलेक्ट करेंगे इस स्केच को और एक्सिस में हम सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को. ओके, सो उस लाइन के अलोंग रिवॉल्व हुआ. ओके, नाउ सिंपली क्लिक ऑन ओके. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सेव दिस पार्ट. फॉर दैट जस्ट प्रेस कंट्रोल एस एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके. सो द पार्ट इज सेव्ड सक्सेसफुली. नाउ अब मैं जाऊंगा फर्स्ट मॉडल में, यानी पैटर्न में. ओके, यहाँ से आप स्विच कर सकते हो. दिस इज अवर पैटर्न. Now I will show you how to use merge inheritance in Creo software. Okay, to open merge inheritance, click on get data and simply click on merge inheritance. Okay, you will see this interface. Okay, so this is the pattern. Now we are going to call core, yani second model. Okay, to call the second model, just click on open and select the part second model. Okay, and click on open. Now just click on the preview option and you will see the second model. Okay, now इस बॉक्स को नीचे लो. So you will see this window. This model is our second model and this is our first model. Now we are going to constrain this. Okay, to constraint, first दोनों मॉडल को एक जैसा करने का ट्राई करो. It will easy for us to constrain. Okay, now select the first reference item. उसमें मैं सेट करता हूँ इस प्लेन को एंड इस प्लेन को. Okay, so ठीक से constraint हो गया. Now again next constraint, click on new constraint. This time
I'm selecting this plane and this plane. Okay, so हमारा second model बीच में आ गया. Still it is not fully constrained. Again click on new constraint. Now I'm going to select the below surface, click on this surface, और इस second part का भी, second model का भी नीचे का surface. Okay, so now it's fully constrained. Okay, so we have successfully placed our second model neatly. Okay, now click on OK. Now from operation type you can merge it, cut, intersect. Okay, for example I'm using cut boolean operation, so and just click on preview. You can see the core has removed from the pattern. Okay, इस तरह आप merge inheritance का यूज कर सकते हो in Creo software.